Namaskar. Dear learners, I hope you all are enjoying the classes that we have gone through and we are going through. I, Dr. Anup Kathat, LT English GHSS Kanbua Kalsi Dehradun, welcome you again with a new session, with a new chapter, an interesting topic from your textbook First Flight. So let's begin. So welcome with a new chapter from your textbook First Flight, class 10th English. We have today chapter 4 from the diary of Anne Frank, written by Anne Frank herself. Areas to be discussed today about the author, thematic approach, introduction of the lesson, autobiography, focus on reading skill, explanation with text, summary of the lesson, concluding key points, and vocabulary drill. All these areas we are going to discuss during our lesson from the diary of Anne Frank. Now coming to the section about the author, we have today Anne Frank. Full name, Anneliese Mary Frank. Anne Frank, full name. Is a picture of Anne Frank. Date of birth 12 June 1929 to March 1945. And this date is all about ending time of Second World War. Which was from 1939 to 1945. So the story moves around World War II. Parents of Anne Frank, Otto Frank, her father, Edith Frank, her mother. Let's have some key points about the author and her background. The Diary of a Young Girl is the name of the book from where this lesson is taken. It was translated from its original Dutch version and first published in English in 1952 as the Diary of a Young Girl. So it is originally written in Dutch language, German language, first published in English 1952, the Diary of a Young Girl with the name. The book was translated into almost 70 languages. She was only 13 when her father gifted a diary to her. वो केवल 13 साल की थी जब एनी के फादर ने उसको गिफ्ट किया डायरी बिकॉज शी वॉज फॉन्ड ऑफ राइटिंग, उसको लिखने का शौक था तो फादर ने सोचा क्यों ना उसको एक डायरी गिफ्ट की जाए. A German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam. Amsterdam is the capital of Netherlands during the German occupation of the Netherlands in World War II. German occupation of the Netherlands in World War II. World War II का जो बैकग्राउंड है, जर्मनी उसके बगल में जो कंट्री है नीदरलैंड्स कैपिटल, वहाँ ये शिफ्ट हो जाते हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है. सो बेसिकली शी इज जूइश गर्ल, जर्मन गर्ल. शी इज रिटन द लाइफ सीन्स ऑफ वर्ल्ड वॉर II. She is actually the witness of the scenes, all the happenings in front of her eyes, the attacks, the bombing, deaths, and the pain she has experienced during the war, World War II, as a child, as a girl. She has portrayed the effects of war in her writings. उन्होंने अपने writings में, अपने लेखनी में युद्ध के जो प्रभाव थे उनको लिखा है. This is all about her writing, all about her diary, which became a book named The Diary of a Young Girl. Now let's come to the theme of the lesson, war and loss. The lesson is all about World War, युद्ध और उसके बाद जो हम खोते हैं जो नुकसान होता है उसके बारे में है. Diary as a friend. She considers her diary as her only friend. Isolation during the war. This is also the theme of the lesson. Degradation of human values. मानव मूल्यों का जो निरंतर गिरना उसने ये भी शो किया है. Cruel and critical time for the generation. जो आने वाली पीढ़ी है और जो वर्तमान पीढ़ी है
उसका एक ऐसा समय दर्शाया गया है, उसके बारे में बताया गया है जो कि बहुत ही जटिल, दुखदाई, बहुत ही निर्दयी जो रूप देखा गया वॉर का, इंसानों का युद्ध के प्रति। द बिविल्डरमेंट ऑफ फैमिलीज एंड रिलेटिव्स, जो दुख है, जो व्याकुलता है परिवारों की, उनके रिश्तेदारों की। सो इट इज ऑल्सो पिक्चराइज थ्रू द डायरी ऑफ एने। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। In the book, The Diary of a Young Girl, Anne Frank demonstrates the significant theme of how war is futile and can be lead to unnecessary, extreme destruction and devastation. जो वॉर है, जो युद्ध है, ये व्यर्थ है, अनावश्यक है और एक दुखदाई और इतना विनाशकारी होता है, डिस्ट्रक्शन है, डिवास्टेशन है, यही इसके रिजल्ट्स होते हैं, कंसिक्वेंसेस यही होते हैं, एक बहुत बड़ा भारी भरकम नुकसान जो झेलना पड़ता है युद्ध में एज ए रिजल्ट ऑफ द एयर रेड्स एंड एरियल वॉरफेयर, जो हवाई जो आक्रमण होते हैं युद्ध में इन यूरोप इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। मैनी यंग चिल्ड्रन वर इंजर्ड, छोटे छोटे बच्चे भी घायल हो गए, एंड स्ट्रिप्ड ऑफ द प्रोटेक्शन एज देयर पेरेंट्स वर किल्ड, और उनके माँ बाप मारे गए, उनको प्रोटेक्शन दी गई ड्यू टू एक्सट्रीम मर्डरिंग बाय द नाजीज, जो नाजीज का जो अटैक हुआ था। दिस इज सीन थ्रू द विजुअल इमेजरी इन नॉर्थ एम्स्टर्डम, और ये सब देखा जा सकता था उत्तरी जो एम्स्टर्डम है, जो कैपिटल है नीदरलैंड्स की, हेविली बॉम्ब्ड ऑन संडे। जर्मन्स जो डिक्टेटर थे उनके द्वारा बॉम्बिंग की गई नेबर कंट्री पर। एंटायर स्ट्रीट्स आर इन रून्स, सारी गलियां बर्बाद हो गई हैं। एंड इट विल टेक अ व्हाइल फॉर देम टू डिग आउट ऑल द बॉडीज, सारे मरे हुए शरीर वहां पर पड़े हुए थे, विच पोजिशंस रीडर्स टू इमेजिन द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। और जो सीन था डिवास्टेशन का, डिस्ट्रक्शन का, वो टेरिबल सीन था, भयानक सीन। एंड रबल लेफ्ट ओवर फ्रॉम द एलाइड फोर्सेस अटैक ऑन जर्मन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। इस प्रकार से अटैक्स जो आपस में चल रहे थे, ये एक प्रमाण था मानवता के मूल्यों का गिरना। एने फ्रैंक communicates to her audience with the help of her diary, her writings, the struggles many innocent children, छोटे छोटे बच्चों ने भी बहुत स्ट्रगल किया, बेघर हो गए, had to endure at such a young age, इतनी छोटी सी उम्र में, as they had no protection, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है, डिफेंस कोई बचाव नहीं है, in order to properly survive in such cruel time in aftermath of the bombing. बॉम्बिंग के बाद, अटैक्स के बाद इस प्रकार से सर्वाइव करना उस जगह में बहुत मुश्किल था छोटे बच्चों के लिए। सो द लेसन इज टोटली ऑल अबाउट द क्रूअल सीन्स, critical scenes of World War II. Now coming to the background of the book written by Anne Frank, The Diary of a Young Girl. So this book is as the autobiography of Anne, a German girl, originally written in Dutch language. Afterwards, it was translated in many languages, about 70 languages, very famous book. Autobiography is a literary genre that is self-written account of a person's life. जब कोई राइटर अपने जीवन के बारे में खुद ही लिखता है, अपने बारे में, अपने जीवन की जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं फ्रॉम द बर्थ, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। लाइफ जर्नी, डॉक्यूमेंटेशन, अपने जीवन का एक चित्रण लेखनी के रूप में। रिटन एज विटनेसिंग द लाइव मोमेंट्स ऑफ लाइफ, आंखों देखी जो घटनाएं अनुभव किया उसको डायरी के रूप में लिख दिया। Now some popular autobiographies that we all know, like Wings of Fire by Dr. APJ Abdul Kalam, Agni Ki Udan, My Experiments with Truth by Mahatma Gandhi, Dreams from My Father by Barack Obama, former president of US, Mein Kampf by Adolf Hitler, a famous German dictator. The story, the background is actually from his land, Germany, Adolf Hitler. So these are some most popular autobiographies of the people, well-known people around the world. We will now read the text and will explain it accordingly. Dear learners,
The Diary of a Young Girl is an account of a little girl, a 13-year-old girl who has experienced the bitter results, bitter consequences of the war. एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपने डायरी में वो सब कुछ लिखा जो उसने विश्व युद्ध द्वितीय जब चल रहा था, जब अपने एंड पर था, वो सारे कड़े अनुभव का उसने उसमें चित्रण किया अपने लेखनी के रूप में। एक छोटी सी बच्ची जो उसने अनुभव किया घरों को बेघर होते हुए देखते हुए, बच्चों का जो उसने दुख देखा
अपनी डायरी में एक्सप्रेस कर रही हूँ अपनी फीलिंग्स को अबाउट माई फैमिली, माई एक्सपीरियंस एज ए चाइल्ड. This is all for the day. Students, we will continue rest text in next video. So dear learners, as we have gone through the text of the lesson from the diary of Anne Frank, a witness for that heartbreaking World War II, and she has experienced the deaths, the brutal images of the human beings and the loss of humanity. So this is all for the day for this video. Take care. Thank you.